was around 75 kgs, ठीक है, and I have lost almost 15 kgs. Right now I am 57, but hi everyone, welcome back to my channel Yati Diaries, and this is Yati. So this is my third video and I'll be sharing with you my weight loss journey. So growing up I was a very obese and overweight person, and मेरे को PCOS भी हो चुका है and I have reversed it successfully. I'll share a video for you girls if you want. And I was around 75 kgs, ठीक है, and I have lost almost 15 kgs. Right now I am 57, but yeah, so almost you can add up on to that like 17-18 kgs, but I'm approximately keeping it 60 for you guys. So basically मेरे को PCOS हो चुका था when I was in my 9th standard, and I'm not really sure मेरा रीज़न क्या था बेसिक, क्योंकि I was student, so मेरी लाइफस्टाइल कोई इतनी ख़राब नहीं थी, बट ठीक है. So basically I was 75 kgs and I was of ugliest kid in my class, और सिर्फ एज अ किड नहीं, 11th-12th में भी आई वॉज द मोस्ट अगली किड एंड आई वॉज ओवरवेट. पीपल यूज टू बुली मी. मेरी क्लास में भी बहुत लोग मुझे बुली कर चुके हैं. आई फेस्ड बुलिंग अ लॉट इन माई लाइफ, एंड सिर्फ फ्रेंड्स लाइक क्लास में ही नहीं, बट मेरी कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी रही हैं इन माई कॉलेज लाइफ. बट आई टेल आई हैव अनदर स्टोरी टाइम ऑन दैट, जहाँ पे देयर वॉज अ गर्ल वॉज like jealous of me, or I don't know, she used to bully me for my weight. And yeah, and मेरे family members में हैं कुछ जिन्होंने मुझे bully करा है related to my weight. So yeah, I guess every other girl suffer from this. So I'll be sharing with you the tips that actually helped me to lose weight, because I have almost tried everything. मैंने घर पे workout भी try किया है, and I have also followed like YouTube videos for the workout. मैंने जिम भी करा है ज्वाइन फॉर लाइक अ लॉट ऑफ टाइम. मैंने योगा भी ट्राई करा हुआ है. मैंने एक्सट्रीम डाइट क्रैशिंग भी करी है, एंड मुझे ईटिंग डिसऑर्डर्स भी रहे हैं. वे आई स्टॉप ईटिंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम. दैट डज नॉट वर्क. ओके, सो आई विल बी शेयरिंग विद यू द टिप्स दैट एक्चुअली वर्क. ठीक है, तो आई वॉज 75 and I am 60. I'm for 57 right now. You can say, and I'm happy with my weight currently, because I think I am like my BMI is normal, and I'm not willing to lose a lot of more weight now. Maybe I'll lose maybe I'll get 55 or 54 something, but yeah. So my first advice would be self love. ठीक है, अर्लियर मैं खुद को प्यार नहीं करती थी. ठीक है, आई यूज टू हेट माई सेल्फ legit. Okay, I used to hate myself. I used to hate the way I look. मेरे को बहुत ही इमेज इश्यूज थे, सेल्फ इमेज इश्यूज. मैं लोगों से नहीं मिलती थी, मैं फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कराती थी. आई लाइक सम ऑफ माई पिक्चर्स वैन आई वॉज ओवरवेट. तो आई यूज टू हेट माई सेल्फ बेसिकली, एंड that was the biggest mistake I did in my life, because ultimately I was not accepting myself the way I am, but I was continuously criticizing the way I look. And somewhere what we think of ourselves is what we see in reality. तो ultimately मैं पूरे टाइम तो माइंड में बोलती जा रही थी, you know, I am the ugliest kid, I am fat, I am fat, I am this, I am that. तो ultimately वो सब चीज़ें manifest हो रही थी, and I was actually becoming more of a dead person. ठीक है, तो but the moment I started loving myself, it's the moment the reality changed. So basically now what I do is I practice self-love. I accept myself the way I am. There are days where you know I feel low. मुझे ऐसा लगता है कि you know अच्छा होता अगर मैं थोड़ी कम और मेरा कम वेट होता है when I see other people. But the reality is कि this is you. Like you can change your reality without hating yourself. अल्टीमेटली अगर मैं खुद को हेट करे जा रही हूँ, दैट इज़ नॉट समथिंग गुड. तो आई जस्ट प्रैक्टिस सेल्फ लव, विच इज़ आई से फर्स्ट थिंग. ठीक है, अगर आप खुद को प्यार करोगे, यू विल एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, देन यू कैन ईजीली चेंज द रियलिटी. क्योंकि कंटिन्यूसली हेट करके तो तुम्हारी रियलिटी चेंज नहीं होगी, नो मैटर हाउ हार्ड यू आर ट्राइंग टू लूज वेट. सेकेंड एडवाइस वुड बी डू फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट हाफ एन आवर. ठीक है, हर इंसान एडवाइस करता है. आई डू लाइक फिजिकल एक्टिविटी. मैंने जिम भी ट्राई किया, एज आई टोल्ड यू, बट फिजिकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट. इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि यू नो जिम जाओ तुम और हैवी वेट लिफ्ट करो, या यू नो योगा जाओ, ये सब करो. ऑनेस्टली
30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी करनी है, कोई भी हो, ठीक है. इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी डांसिंग. लाइक मुझे पर्सनली डांस बहुत पसंद है, तो नाउ इन माई करेंट वेट लॉस रूटीन आई डांस इट आउट. ठीक है, मैं गाने लगाती हूँ, आई जस्ट डांस फॉर लाइक एन आवर. मेरी पूरी पसीने पसीने हो जाती हूँ, तो मैं डांस करती हूँ एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स. ठीक है, कैलोरीज बर्न करने में. So that is something which actually helps me. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी मैंने जिम भी स्टॉप कर दिया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिम में भी मुझे इतना कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा नहीं. सो या, एंड इनफैक्ट मैं जिम जा रही थी तो मेरा वेट लॉस बढ़ रहा था कम होने की जगह, बिकॉज आई वॉज बल्किंग सब अनकॉन्शियसली. ठीक है. द थर्ड थिंग वुड बी ईटिंग स्टाइल. ठीक है, ईटिंग हैबिट्स आपको थोड़ी फिक्स करनी पड़ेगी. इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा खाते हो, लाइक व्हाट आई डू बेसिकली कि मैं अपनी प्लेट में आई टेक सम पोर्शन ऑफ फूड एंड उतना ही खाओ. फिक्स योर अमाउंट कि भाई मैं 2 रोटी खाऊंगी, आई जस्ट ईट 2 चपातीस और इधर आई ईट राइस. ईट एवरीथिंग यू वांट बट द पोर्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. मैं सब खाती हूँ. आई लव स्वीट्स. लाइक आई एम अ पर्सन हु क्रेव स्वीट्स ऑल द टाइम, बट द थिंग इज आई हैव केप्ट माई पोर्शन इन कंट्रोल. ठीक है, तो मैं लिमिटेड खाती हूँ. सो दैट इज़ वॉट हेल्प्स. अगर आप खा रहे हो, ईट इट बट कंट्रोल योर पोर्शन. ठीक है, डोंट ईट टू मच कि ओके आई गॉट टू ईट स्वीट्स. और अल्टीमेटली तुम लोग रिस्ट्रिक्ट करोगे ना, तो फिर वो चीज़ होगी कि लाइक अगर तुमने बिल्कुल ही बंद कर दी कोई चीज़, तो फिर वो क्रेविंग आएगी एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा इच्छा होगी वो खाने की. सो अल्टीमेटली दिस इज नॉट गोना हेल्प यू. तो लाइक लिमिट द पोर्शन यू विल बी ईटिंग. द फोर्थ थिंग वुड बी डोंट कीप योर सेल्फ हंग्री. ठीक है, डोंट डू दैट गर्ल्स, डोंट एवर डू दैट. अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम भूखे रहोगे, तुम्हारा वेट लॉस कम होगा, सो दैट विल नॉट गोना हैपन. उससे वेट और बढ़ता है ऑनेस्टली, क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लोटिंग होती है, ये सब चीज़ें होती है. आई हैव ट्राइड डूइंग दैट. ठीक है, मैंने वो भी करा है. मैं आई स्टॉप्ड ईटिंग एंड मैं कई बार फूड मिस करती थी, बट उससे कोई भी चेंज नहीं आता है, ह्यूज चेंज. एंड इनफैक्ट उस टाइम पर मेरे को और भी डिजीज़ होने लग गई थी. सो डोंट डू दैट. ओके, भूखा मत रखो. ईट फूड, राइट अमाउंट ऑफ फूड, राइट क्वान्टिटी ऑफ फूड एंड कैलोरीज का काउंट रखो. एंड माई नेक्स्ट एडवाइस वुड बी इंटरमीडियंट फास्टिंग. आई एम टेलिंग यू गाइस, इंटरमीडियंट फास्टिंग इज़ द गेम चेंजर. ठीक है, मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग ही कर रही हूँ अभी भी. एंड मैंने बीच में 3-4 बार इंटरमीडियंट फास्टिंग करी है, बीच में ब्रेक लेके. इंटरमीडियंट फास्टिंग से जो मेरा रैपिड वेट लॉस हुआ है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग. ठीक है, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है. सो जस्ट ट्राई इंटरमीडियंट फास्टिंग. ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग एकदम से स्टार्ट कर दो या एकदम से टेक योर टाइम एंड स्टार्ट इंटरमीडियंट फास्टिंग. और उसके साथ तुम लोग कैलोरी डेफिसिट में रहो. लाइक सपोज तुम्हारा कैलोरीज 2000 नीडेड है पर डे की, तो तुम लोग थोड़ी 300 से 400 कम कर दो. टेक 1600 समथिंग कैलोरीज. भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन विच आर लो इन कैलोरीज. यू कैन ईट फ्रूट्स, you can eat cucumber because summer here. You can eat makhanas. So eat something that keeps you full for long time and which is also low in calories. So that is something. So intermittent fasting, if you guys want, I'll make a separate video on how I do intermittent fasting and I'll make a video on that. ठीक है, एंड उससे ही मैंने ऑलमोस्ट 10 kg सिर्फ इंटरमीडियंट फास्टिंग से लूज़ करा है. नेक्स्ट वुड बी वॉक. वॉकिंग एक्चुअली बर्न्स अ लॉट ऑफ वेट. ठीक है, अगर तुम लोग 10,000 स्टेप्स पर डे कर रहे हो, सो इट बर्न्स अराउंड 500 कैलोरीज. सो वॉक इट आउट. अगर तुम लोग कॉल पे बात कर रहे हो, जस्ट पिक अप योर फोन, जस्ट वॉक. ठीक है, इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग, जस्ट रीड वाइल वॉकिंग. इफ़ यू आर यूजिंग योर फोन, यू आर स्क्रोलिंग रील्स, जस्ट वॉक. ठीक है, तो वॉकिंग इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर मेरे लिए भी. एंड आई वॉक अ लॉट. लाइक इवन इफ आई एम स्टडिंग, आई जस्ट पिक अप माई बुक एंड आई एम जस्ट वॉकिंग अराउंड. सो वॉकिंग शुड बी योर मेन प्रायोरिटी. करो वॉक. जितना वॉक करोगे, you will feel the change in your body. So that is something which I follow. Yeah, and this is it for the video. And I don't know if ये वीडियो इतना अच्छा सा मैंने प्रॉपर बनाया है, क्योंकि आई एम न्यू टू दिस यूट्यूब वीडियो मेकिंग. But I'll try to improve my content, and हो सकता है if you guys want, I'll make a more detailed video, more extremely detailed video on this topic in future maybe. And yeah, that's it for this video. So girls, don't keep yourself hungry, and if you guys want, I'll make another video on what diet I follow and on my intermittent fasting. And also I can also guide you
for your PCOS journey. Like I have suffered from PCOS for almost 5 years, and there are a lot of things that I changed in myself, and right now I have reversed it all. So yeah, if you guys want, I'll make a video on that too. So do like the video if you liked it, and do subscribe the channels, and that's it. Love you all.